Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. So my dear friends, as I promised you that I will be covering the backlog PIB Current Affairs from 12th to 23rd of October and ये backlog obviously इसलिए create हुआ था because of the RBI Grade B Phase 1 examination. But जैसे कि आपको पता है मैंने कई बार बोला है जब तक मैं हूँ तब तक PIB चलता रहेगा. You don't have to at least in your preparation journey, you don't have to at least वरी अबाउट द पीआईबी करंट अफेयर्स. अच्छी बात इन दिनों की 12 से 23 अक्टूबर की अच्छी बात यह है दोस्तों दैट देयर वर नॉट इनफ न्यूज बिकॉज जो दिवाली वाला हफ्ता था यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 18th अक्टूबर से लेके 23rd तक उसमें तो बहुत ही कम न्यूज़ है, मतलब एक दो न्यूज़ है. ठीक है, तो जो मेजॉरिटी न्यूज़ है हमारी वो है 12 से 17 सितंबर तक के बीच की. ठीक है, पर ठीक है हम इसको दो सेशन में ही कवर करेंगे सो दैट बहुत लंबी क्लास ना हो. ठीक है, सो टुडे वी विल बी कवरिंग द पीआईबी करंट अफेयर्स फ्रॉम 12th to 17th of October and one more video I'll provide where I will be providing the current affairs from 18 to 23rd. ठीक है, उससे पहले का यानी 11th तक और 24th के बाद का आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय रेगुलर क्लासेस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ फॉर द डे. एंड मैंने न्यूज़ के लिए क्वेश्चंस नहीं बनाए बिकॉज उसकी वजह से क्लास बहुत लंबी हो जाती है एंड सिंस इट इज़ नॉट अ लाइव क्लास ऑल्सो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको आंसर देना है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नहीं, न्यूज़ नंबर 1 इज नीति आयोग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी. नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है रिगार्डिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी. रिपोर्ट ऑन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज. इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी दिस ओनली दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट और मे बी कुछ और एक दो चीजें आ जाए बट हाई चांसेस आर देयर कि इसमें से क्वेश्चन यही आ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया इज द second largest fish producing country in the world and India accounts for 8% of the global production. They can also ask you this question from this particular data that how much percent India accounts in the global production of fishes. तो 8% हमारा आंसर हो जाएगा. And India's fishery sector supports nearly 30 million livelihoods. ठीक है, the India's fishery sector provides employment opportunities to 30 million people and contributes significantly to exports as well. राइट, जो फिशरी प्रोडक्ट्स से हमारी अर्निंग थी दैट वाज 60,523 करोड़ इन फाइनेंशियल 23-24. राइट, इसके अलावा दिस रिपोर्ट हैज हाइलाइटेड दैट देयर आर certain key interventions required in the fishery sector if we want to take it forward. Number one, we need to strengthen the institutional and capacity building. We need to strengthen the institutional and capacity building of the fisheries farmers, fishermen. ठीक है, we need to modernize the fleets and we need to upgrade the infrastructure of course. We need to promote the sustainable fisheries management. Sustainability बहुत जरूरी है चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो. And here also the Niti Aayog has recommended the sustainable fisheries management. We need to mobilize the resource in financing. We need to mobilize the resources in a way that we are leveraging that we could leverage maximum from that particular resource, right? And we need to of course focus on the financing and we need to enhance the local community participation, right? देन इसके अलावा कॉस्टिंग फ्रेमवर्क पे इसने थोड़ा सा ज्ञान दिया है इस रिपोर्ट ने कि हमें किस किस तरीके से फिशरी सेक्टर को डेवलप करना चाहिए. सो इन द फेज 1 दिस रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड दैट वी नीड टू ले द फाउंडेशन एंड वी नीड टू फॉस्टर द अर्ली ग्रोथ. It has been recommended for a period of 3 years starting from this year to 2028. Then this report has highlighted that we need to scale up and achieve the global competitiveness in the fisheries sector and that should be done for the next 4 years after 2028 starting from 2029 to 2032. And the last phase will be for focusing on the global leadership in sustainable deep sea fisheries and it will be फॉर 8 years एंड बियॉन्ड. मतलब फिर उसके आगे तो आप आगे बढ़ते जाइए, देयर इज नो लिमिट. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज क्लियर. लेट्स कम टू द सेकंड न्यूज दैट इज एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम. एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इट हैज लॉन्च द एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉइज एनरोलमेंट नाम से ही क्लियर है एंड सिंस इट इज बीइंग रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट which means it must have something to do with employees provident fund. Okay, so yes, that is the scheme to bring a large number of workers under the ambit of organized social security through EPFO. यानी कि ऐसे employers जिन्होंने अभी अपने जो कि एलिजिबल हैं, है ना, और
उन्होंने तब भी अपने एम्प्लॉइज का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उनको मौका दिया है इस स्कीम के थ्रू सरकार ने कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पे करिए और पेनल्टी से बचिए। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम विल बी 1 नवंबर टू 2025 टू 30th ऑफ अप्रैल 2026। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? So this scheme encourages employers to voluntarily declare and enroll the eligible employees. ठीक है, the employees which are eligible for EPFO, the employers are invited, the employers are encouraged, are being encouraged under this particular scheme to voluntarily declare and enroll the eligible employees. ठीक है, now it will be available for both already registered and newly coming employees under the purview of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act of 1952. तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर जो नई ऑर्गेनाइजेशंस या नई कंपनीज आ रही हैं अंडर द परव्यू ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, उन सब के लिए एप्लीकेबल होगी ये वाली स्कीम। ठीक है, नाउ इसमें जो विंडो दी है गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, वो ये दी है कि एम्प्लॉयर्स कैन एनरोल दी ऑल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स who joined the establishment between the period of 1st July 2037 and 31st October 2025। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉइज जिन्होंने 1 जुलाई 2027 से लेके 31 अक्टूबर 2025 के बीच में ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। एंड फॉर सच एम्प्लॉइज इफ द एम्प्लॉयर हैज नॉट अगर एम्प्लॉयर ने उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ठीक है, तो इन दैट केस वो करा सकते हैं। ठीक है, एंड हु आर अलाइव and employed on the date of the declaration but were not enrolled in the EPF scheme earlier for any reason, किसी भी रीजन से अगर नहीं कराया तो उनको कराना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूशन की रिबेट गवर्नमेंट ने दे दी है। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, द एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पीरियड मतलब कौन सा पीरियड, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025, इट शैल स्टैंड वेव्ड। ठीक है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है सरकार कह रही है कि ठीक है हम वो उसको वेव ऑफ कर देते हैं, but the employer has to pay their own share for such period। sorry, employees का जो शेयर है, of course employees का जो शेयर है वो वेव ऑफ कर दिया, लेकिन employers का जो शेयर है वो कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को भरना पड़ेगा। ठीक है, there is a penalty of ₹100 only as a lump sum। ठीक है, and all these employers who will in future get registered under this particular scheme, they will also be eligible to take the benefits of प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। उनको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम। आई होप देयर आर नो डाउट्स। कोई डाउट्स होंगे तो माय डियर फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल और आईडी। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे माय डियर फ्रेंड्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली on 16th of October, and why is it observed? To raise awareness about food security, nutrition and sustainable agricultural practices। ठीक है, now why this day is celebrated? This day is celebrated to mark the foundation day of United Nations FAO, right? And this day was formally observed for the very first time in the year 1981, and that time the theme was food comes first. However, for the year 2025 the theme is hand in hand for better foods and better future, hand in hand for better foods and better future. Now there are a lot of initiatives being implemented by the government of India for ensuring the food security, nutrition and sustainable agriculture practices, which are these: number 1, National Food Security Mission, very important mission। इससे NABARD में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। National Food Security Mission दोस्तों was launched in the year 2007-8। Why it was launched? To expand the to increase the production of rice, wheat and pulses। ठीक है, how? Through area expansion and productivity enhancement। area expansion करके और productivity enhancement करके the objective was to increase the production of rice, wheat and pulses so that we would not have to depend on the imported rice, wheat or pulses। we would be self reliant in the case of rice, wheat and pulses। ठीक है, in 2014-15 this mission was expanded to include the coarse cereals। ठीक है, और इसमें जो फोकस था that was continued on productivity, soil health and farmer income। and in 2024-25 it was again expanded and it included under its ambit not only the food production but also the nutrition। ठीक है, एक्सपैंड करके इसका नाम पहली बार तो चेंज हुआ, क्या हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है,
Thereby, it is now putting a dual emphasis on food production and nutrition. फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन दोनों के ऊपर इसका अब एम्फेसिस है, फोकस है. क्लियर. मूविंग हेड टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. So this act, my dear friends, covers up to 75% of the rural population and 50% of the urban population, totaling approximately 81.35 crore people who are being provided absolutely free ration in two categories. These number of people are divided in two categories depending on their status of poverty. ठीक है. These are अंत्योदय अन्न योजना and priority household. जो अंत्योदय अन्न योजना वाली फैमिलीज हैं, दे आर गेटिंग 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ. लेकिन जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी है, दे आर गेटिंग 5 kg पर पर्सन पर मंथ. क्लियर है. एंड करेंटली अबाउट 78.90 करोड़ बेनिफिशियरीज आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट थ्रू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है जी. ये तो एक एक्ट है. ये एक्ट मैंडेट करता है दैट वी नीड टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स, फ्री फूड ग्रेन्स टू दी अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स. बट इट इज बीइंग डन थ्रू द a scheme that is called as what? Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. I hope you guys have heard about this particular scheme. Okay. Then we have a mechanism that is called as Smart PDS. What is it? Scheme for modernization and reforms through technology in PDS. PDS is public distribution system under which ये जो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हम फ्री राशन देते हैं टू द बेनिफिशियरीज, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है. So now obviously Smart PDS aims to improve the technological backbone of PDS and bring transformative change by December 2025, and it is being done through focusing on 4 modules. 4 modules के ऊपर फोकस किया जा रहा है. नंबर 1 फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ ग्रेन्स, नंबर 3 ration card and fair price shop management, and number 4 biometric based grain distribution module. Just remember that there is an initiative that is called Smart PDS, which is there for technological enhancement of the entire public distribution system. ठीक है. क्लियर है कि नहीं. देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपको पता ही है, इसका आउटले कितना है 11.80 लाख करोड़. ठीक है. देन वी हैव भारत आटा एंड भारत राइस विच इज द ब्रांड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रांड्स ऑफ flour and wheat flour and rice. ठीक है. These were launched to provide wheat flour and rice to general consumers at subsidized rates under the open market sale scheme domestic. ठीक है. These are the government of India brands. Okay. So that's all for this particular news. I hope it is clear. Moving ahead to the next news, PLFS for the month of September. So अभी इन्होंने monthly निकालना शुरू कर दिया है. So if your exam is in let's say October, so then you need to cover the PLFS for the month of September. Otherwise last quarter, last month. ठीक है. PLFS आपको कौन सा करना है? लास्ट क्वार्टर का करना है और लास्ट मंथ का करना है विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ योर एग्जाम. ठीक है. तो अभी अगर जैसे SBI का क्लर्क का मेंस आई थिंक अभी, तो यू गाइज हैव टू डू PLFS September. Okay. NSO has released the PLFS for September 2025. ओवरऑल 2 मेजर की हाईलाइट्स इसमें बताई गई हैं, एंड दैट इज ओवरऑल LFPR has reached the 5-month high level of 55.3. LFPR मतलब labor force participation rate, how many persons are engaged, are available for work in the population. Overall worker population ratio was reported as 52.5% and it was highest since May 2025. ठीक है. LFPR और WPR दोनों में इंक्रीमेंट आया है, दैट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट रेट इज गोइंग अप. ओके. अब अगर हम बात करें ओवरऑल इनकी वैल्यूज की, LFPR फॉर रूरल 57.4, अर्बन 50.9 एंड ओवरऑल 55.3. WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 54.8 इन रूरल, 47.4 इन अर्बन एंड 52.4 इन ओवरऑल. एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.6, 6.8, 5.2. अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माइग्रेशन की वजह से और जो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है इन अर्बन एरियाज उसकी वजह से. बिकॉज ऑफ कोर्स अब कोई यूपी या बिहार के किसी रूरल इलाके का कोई ग्रेजुएट पर्सन है, सो देयर इज नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन यूपी, इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राइट. सो दे मूव टू द अर्बन प्लेसेस like Delhi, Mumbai, and in fact the urban places in the respective states as also to for the livelihood opportunities. ठीक है. तो इसीलिए अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ज्यादा है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर PLFS September. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्स सर्विसमैन.
financial assistance for ex-servicemen. So why we are talking about it? Because the Ministry of Defence headed by Mr. Rajnath Singh has approved a 100% increase in financial assistance for ex-servicemen and their dependents under the schemes implemented by the Department of Ex-Servicemen Welfare. So there is a separate department for ex-servicemen welfare under the Ministry of Defence, and this department uh, implements schemes which are meant for the welfare of the ex-servicemen and their dependents. Okay, the revised rates take effect for application submitted from 1st of November 2025, and for this the annual financial implication will be rupees 257 crores. ठीक है, these schemes जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए स्कीम्स लॉन्च इम्प्लीमेंटेड हैं, चल रही हैं, all of these schemes are funded through the Raksha Mantri Ex Servicemen Welfare Fund, which in turn is a subset of Armed Forces Flag Day Fund. ठीक है जी, तो एक अम्ब्रेला फंड है दैट इज कॉल्ड एज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, उसके अंदर एक सबसेट है, एक सब फंड है जिसका नाम है रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड, और उसके थ्रू एक्स सर्विसमैन की फाइनेंशियल वेलबींग का ध्यान रखा जाता है. ठीक है जी, क्लियर है. कौन कौन से ग्रांट्स में इंक्रीज अप्रूव किया गया है? नंबर 1 पेन्यूरी ग्रांट. ठीक है, 100% इंक्रीज हुआ है. ठीक है, यानी कि डबल हो गया है. पेन्यूरी ग्रांट जो है वो 4000 से बढ़ के कितना हो गया? 8000 पर मंथ पर बेनिफिशियरी. इट हैज बीन डबल्ड फ्रॉम ₹4000 to ₹8000 per month per beneficiary. Now, what is this penury grant actually? So, under this particular grant, the government provides lifetime support to aged and non-pensioner ex-servicemen. जो aged और non-pensioner ex-servicemen है, उनको lifetime support मिलती है. And in case अगर वो नहीं है, तो to their widows above 65 years of age with no regular income. अगर उनकी कोई regular income नहीं है तो, right? Then education grant is provided to the children of the ex-servicemen, and it has been increased from 1000 to 2000 per month per head for up to 2 dependent children, and this amount is provided right from the class first up to the graduation of the child. जब तक कि उसकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक पैसा मिलता है ये वाला. ठीक है, and this is also provided to the widows pursuing a 2-year postgraduate course. ठीक है, widows of ex-servicemen. Next is marriage grant. So it has been increased from 50,000 to 1 lakh per beneficiary, and it is applicable, my dear friends, for up to 2 daughters of ex-servicemen and for widow remarriage as well. So if in any case ex-serviceman's widow wants to get remarried, then also the government provides marriage grant of rupees 1 lakh. ओके, क्लियर है जी, क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं अप्रैल टू सितंबर का ट्रेड कैसा रहा क्वार्टर का. अप्रैल टू सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें ट्रेड कैसे रहा. ठीक है, क्वार्टर नहीं एक्चुअली 6 महीने. तो फॉर सितंबर 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट्स $67.20 बिलियन, ग्रोथ ऑफ 0.78%. टोटल इंपोर्ट्स $83.82 बिलियन विद द ग्रोथ ऑफ 11.34%. ठीक है, वैसे तो इस वाली पर्टिकुलर रिलीज में हजारों चीजें हैं, हजारों, बट आई बिलीव कि अगर वो हजारों चीजें मैं डाल दूंगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, है ना. वैसे और बहुत सारी चीजें होती हैं याद करने के लिए. आई डोंट थिंक कि सब कुछ मैं दे दूं. ठीक है, सो माई जॉब इज टू प्रोवाइड दैट portion only which is relevant and required for the examination and to obviously cut down your own work. अब आप लोग जाके PIB पे पढ़ेंगे तो भाई साहब बैंड बच जाएगी आपकी. ठीक है, अप्रैल टू सितंबर 2025 में टोटल एक्सपोर्ट्स $413.30 बिलियन विद ग्रोथ ऑफ 4.45%. एंड इंपोर्ट्स की बात करें तो $472.79 बिलियन विद ग्रोथ ऑफ 3.55%. एंड वी ऑलवेज बी इन द ट्रेड डेफिसिट एज वी कैन सी. हम जब भी, जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम जब भी हर महीने का ट्रेड डेटा पढ़ते हैं तो ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है, यानी कि इंपोर्ट्स आर ऑलवेज मोर देन दी एक्सपोर्ट्स. ठीक है जी, चलिए. और ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों. ठीक है जी, क्लियर है. चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स. स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज रिलीज्ड द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स एंड द स्टेट रैंकिंग्स. नाउ दिस वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2025-26. दैट वाज अनाउंस्ड in budget 2025-26 by finance minister Nirmala Sitharaman. Now this index, what is it? It is a
performance benchmarking framework. What is it? It is a performance benchmarking framework. मतलब इससे हम जो माइनिंग जो स्टेट की जो स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उनको रैंक करेंगे हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन द माइनिंग रेडीनेस, ठीक है. इट वैल्यूएट्स एंड रैंक्स द इंडियन स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी, रिफॉर्म रेडीनेस इन द माइनिंग सेक्टर एंड सस्टेनेबिलिटी इन द माइनिंग सेक्टर, ठीक है. एफिशिएंसी, रिफॉर्म रेडीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीन चीजों के ऊपर स्टेट्स को असेस किया गया है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. चार इंडिकेटर्स है. नंबर 1 ऑक्शन परफॉर्मेंस, नंबर 2 अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन, नंबर 3 एक्सप्लोरेशन थ्रस्ट एंड नंबर 4 sustainable mining practices, right? And the states have been divided into three categories. Number 1 category A, these are the mineral rich states. Category B, these are the moderately endowed states, and category C, these are the low endowment states. Clear है जी? भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई नो कि लाइव क्लास नहीं है तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट ठीक है यार, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट इन द बेस्ट वे दैट आई कैन डू. कैटेगरी ए में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात. In category B, the top 3 states are Goa, Uttar Pradesh and Assam. And in category C, we have the top 3 states as Punjab, Uttarakhand and Tripura. Now please remember, you need to remember the top 3. ठीक है जी, आपको टॉप 3 याद करना है because that is the demand of the exams these days. Clear? चलिए, let's move ahead to the questions in short now. But before that, the people who are coming here for the first time, let me tell you that PIB is the most authentic source. PIB stands for Press Information Bureau. That is the most authentic source for all the current affairs, for all the government exams. If you want to have the PDF of this particular class, you can just scan this QR code and join the Telegram channel to get the PDFs. ठीक है, बस ये आप इसको स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और PDF ले लीजिए एब्सोल्युटली फ्री. चलिए, next question. For the month of September 2025, the all India CPI for AL decreased by 0.11 points to 136.23, while the index for rural laborers decreased by 0.18 points, reaching 136.42. What is the base year? The base year is 2019. But my dear friends, do remember, while going through the questions in short, आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भी ध्यान देना है. अब आप देखो ना, क्या पता आपसे एग्जामिनर, अब मैंने तो चलो बेस ईयर पूछा आपसे, मैंने आपसे क्या पूछा, बेस ईयर पूछा, बट क्या पता आपसे एग्जामिनर ये वाला नंबर पूछ ले, दैट व्हाट वाज द CPI AL in the month of September 2025. In that case the answer would be 136.23. so these questions in short actually है क्या, कुछ बहुत सारी PIB रिलीजेस में क्या होता है कि देर आर यू नो सर्टेन रिलीजेस जिसमें कुछ 3-4-5 लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में दे देता हूँ आपको, उसमें इतनी ज्यादा डिटेल्ड चीजें होती नहीं. ठीक है, तो आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पूरा पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कामिक स्टेट यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन MOU विद Nalanda University to strengthen the educational and cultural ties. To which country Kamik State Universities belong? It belongs to the country Russia. Okay, now they can also ask you the name of the university, that which university has signed an MOU with Nalanda University. In that case the answer will be what? Kamik University. I have asked you this, the country, right? तो इस तरीके से प्रिपेयर करना आपको पूरा अच्छे से. Which IIT has joined hands with Coal India Limited to establish the Center for Sustainable Energy, which will serve as a hub for cutting edge R&D and capacity building initiatives in sustainable energy technologies. It is the IIT Madras. Okay, now here in this question they can ask you that with which of the PSUs IIT Madras has signed an MOU for this particular purpose. तो आंसर क्या हो जाएगा in that case? Coal India Limited. तो इसलिए भैया पूरा अच्छे से, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए सब कुछ. India participated in the 10th session of Conference of Parties COP10 to International Convention Against Doping in Sport held at UNESCO headquarters in Paris. During the event, India was re-elected as the vice chairperson of the Bureau of the Asia Pacific, that is Group 4, for the term 2025 to 27. Brazil, Zambia and Kingdom of Saudi Arabia were also elected as vice chairs for their respective regional groups. अलग-अलग regional groups हैं. India अपने ग्रुप में वाइस चेयर चुना गया. क्वेश्चन ये है that which country has been selected as the chairperson of COP10 Bureau. ठीक है, this country in question is Azerbaijan. Now if you see this question, there are a lot of information. ठीक है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है कि COP10 हुआ कहाँ जी, पेरिस में हुआ. इंडिया को
इंडिया क्या चुना गया जी, वाइस चेयर चुना गया। या ये भी पूछा जा सकता है विच कंट्री हैज बिन अपॉइंटेड और री इलेक्टेड एज दी वाइस चेयर ऑफ द ब्यूरो ऑफ एशिया पैसिफिक इन ग्रुप 4। दैट केस आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इस तरीके से, या ये भी पूछा जा सकता है विच कंट्रीज अलोंग विद इंडिया हैव बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर्स फॉर द रिस्पेक्टिव रीजनल ग्रुप्स इन कोप 10। तो आंसर क्या होगा, ब्राजील, जाम्बिया एंड सऊदी अरेबिया। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें दोस्तों, सो इट इज अ मल्टीलैटरल यूनेस्को ट्रीटी under which the states have agreed to adopt the national measures to prevent and eliminate the doping in sports. Right? It was adopted during the General Conference of UNESCO that took place in Paris on 19th of October 2005, while it entered into force on 1st of February 2007. ठीक है, और उस समय इसकी रेटिफिकेशन कितने स्टेट्स ने करी थी, कितने कंट्रीज ने करी थी, 30 कंट्रीज ने। ओके, next question, by how much percent the combined index of 8 core industries has been increased in the month of September 2025? It has been increased by 3%. Ministry of Civil Aviation has celebrated the 9th anniversary of RCS Udan, Ude Desh Ka Aam Nagrik. How many routes have been operationalized under the scheme connecting 93 unserved and underserved airports, including 15 heliports and 2 water aerodromes, facilitating over 1.56 crore passengers through 3.23 lakh Udan flights? It is 649. The right answer is option C. The Department of Posts, in collaboration with the Department of Ex-servicemen, has launched a dedicated service to facilitate the pickup, booking, transmission, and doorstep delivery of medicines that are not available at ECHS polyclinics under Ex-servicemen Contributory Health Scheme. ECHS का मतलब यही है। From where the pilot project of the service was launched in July 2025. इसका pilot project launch हुआ था दोस्तों दिल्ली से, ठीक है। Now it has been launched pan India. Very important question. The 8th Rashtriya Poshan Maha was launched from Dhar, Madhya Pradesh on 17th of September 2025, emphasizing that women's health and nutrition are the foundation of strong families and a Viksit Bharat. The concluding ceremony took place on 17th of October 2025 in Dehradun. तो अब ये भी याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कंक्लूजन कहाँ पे हुआ। स्टार्ट हुआ था धार इन मध्य प्रदेश और खत्म हुआ देहरादून इन उत्तराखंड। क्लियर है भैया? चलिए, इंडिया represented by Surveyor General of India Hitesh Kumar S. Makwana has been elected as the co-chair of the Regional Committee of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific. ठीक है, Geospatial Information Management Organization है, right? The elections were conducted during the 14th plenary meeting of UNGGIM AP, which took place in the Republic of Korea. जो कि कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ था। अब ऑफ कोर्स हमें इसकी बात तो करनी पड़ेगी। इट इज दिस पर्टिकुलर ये जो ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रीजनल कमिटी है, इट इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल 5 कमिटीज है, उनमें से एक ये है एशिया पैसिफिक, राइट। इट रिप्रेजेंट्स द नेशनल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन एजेंसीज of 56 countries in Asian Pacific region। और इसका काम क्या है, ये करता क्या है, ठीक है। इट मैक्सिमाइजेज इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, यानी कि जियो कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। दैट्स इट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। इट्स सेक्रेटेरिएट इज इन UN Escape, which is in Bangkok in Thailand. Clear है? Next question. Where has the 78th session of the WHO Regional Committee on Southeast Asia taken place? It took place in Colombo in Sri Lanka. Which of the following 2 laboratories of DRDO have indigenously developed the military combat parachute system? Parachute system है एक military combat, जिसको कौन सी 2 DRDO की laboratory ने not inaugurate actually develop किया है? These are Aerial Delivery Research and Development Establishment in Agra and Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory of Bangalore. The right answer is 1 and 5. With which country Indian Navy is hosting the 5th edition of the Joint Bilateral Maritime Exercise Samudra Shakti 2025 at Visakhapatnam? It is of course Indonesia. Everyone knows this. The Bureau of Energy Efficiency has invited applications for 35th National Energy Conservation Awards 2025.
The awards were instituted in 1991 to honor the exemplary contribution of industries, building, transport undertakings, and institutions in reducing the energy consumption and enhancing the energy efficiency. In how many categories the awards will be given? The awards will be given in 7 categories. This year, a new category has been included. Before this, this award used to be given in 6 categories, but this year in 2025, it will be given in 7 categories, and the categories are these: industries, transport, buildings, institutions, energy efficient appliances, energy efficient innovation, and this is the new category that has been included: content creators and influencers. Clear? Next question. According to Ministry of Housing and Urban Affairs, the number of districts most affected by Naxalism have been brought down to 3 from 6. These are Bijapur, Sukma, and Narayanpur. The question is, to which state the districts belong? The district belongs to the state of Chhattisgarh, and we have a target to eliminate the Naxalism from India by March 2026, and I think we'll be able to achieve this, क्योंकि अब 3 ही districts ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा disturbance है. इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में थोड़ी disturbance है, बाकी शांति है. Which city of India has been recommended by the Commonwealth Sports Executive Board as the host city for Centenary Commonwealth Games in 2030? इंडिया ने अप्लाई करा था, रिकमेंडेशन मिल गई है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, अभी फाइनल नहीं हुआ है. दिस सिटी ऑफ कोर्स इज अहमदाबाद. The 8th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs is being hosted by the Government of India, with the Spices Board of India serving as the secretariat under the Codex Alimentarius Commission. Where is the session being organized? It is being organized in Guwahati, Assam. And my dear friends, you must be waiting when I will be saying that this is the last question for today. So this is the last question for this particular class, in which 3 universities, Dr. Ambedkar Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, has signed an MOU for the establishment of new Dr. Ambedkar chairs. These are Mumbai University, Jaipur National University, and GB Pant University of Technical and Agriculture. Okay? So 1, 3 and 4 will be the right answer to this particular question. Okay? Alright, my dear friends, that's it for today's class. This particular class, where we have covered the PIB news from 12th to 17th of October. One more video I will be providing maybe tomorrow or day after, and your entire backlog will be covered. Don't worry, I have already covered the content. I just have to create a video. So I will be providing it by tomorrow or maybe day after. Okay, thank you very much. If you have any doubts, please do not do not feel shy in asking your doubts in the comment section, and you can also ask me. You can also DM me on Telegram at Manish Manish for any of your queries, right? And you can, for this PDF, you can just scan this QR code and join the Telegram channel. Thank you very much, my dear friends. Goodbye, take care, and God bless.